Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोस गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोस रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें वेस थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म विषय रे पढिबा ऑलरेडी आमे जानिला जेतले डोमेन थ्योरी देखुतिला सो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहले आमे बुझिबा these are the substances which can be magnetized and retain their magnetism even after removal of the external magnetic field okay जो मैग्नेटिक फील्ड को आमे बाहर अप्लाई करथिबा ताकू रिमूव कर देले मध्य से माने मैग्नेटिज्म को रिटेन करथांती यार फेमिलियर एग्जांपल्स हला आयरन निकेल कोबाल्ट ता सहित गैडोलिनियम डायस्प्रोसियम सो एई सब सब्सटेंस आ ता सहित सेमानकर एलॉयज बा मिश्र धातु मध्य ओके मेन फीचर्स ए जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रहला द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम m which is produced in such substances is very high and even in weak magnetic fields यार वैल्यू टा हाई रहिबो तापरे सेकंड पॉइंट रे द वैल्यू ऑफ m is not linearly proportional to the applied magnetic field that is ba or in other words their magnetic susceptibility chi m is which is equal to mu 0 m by ba SI unit रे is not constant but ये vary करिवो with respect to the applied field तापरे थर्ड पॉइंट ये कहूची above a certain critical temperature by transition temperature जाको कि हमें क्यूरी टेम्परेचर कहि थाउ सो ए पॉइंट होची क्यूरी पॉइंट that is TC C stands for critical এটা হলো critical temperature they behave as paramagnetic substance critical temperature रु बेसी हे गले से माने paramagnetic substance भलिया behave करथिबे एवं एमानकर जो susceptibility at any temperature which is higher than critical is given by the Curie-Weiss law that is chi m is equal to C by T minus Tc okay and now the susceptibility has a singularity at T equal to Tc माने at critical temperature the susceptibility is a singular value okay and at this temperature and below there exists a spontaneous magnetization because if the susceptibility chi m is infinite then we have finite m for zero value of the applied field ba okay so this is due to the interaction between the magnetic ions which is strong enough to align their magnetic moments against the disorder which is produced by the thermal effects okay now the Curie temperature actually is the temperature which is above which the spontaneous magnetization vanishes okay Curie temperature ru upare spontaneous magnetization vanish kari jibo okay सेटा paramagnetic substance भलिया behave करिवो so it separates the disordered paramagnetic phase at temperature above Curie temperature okay from order ferromagnetic phase मने रखो paramagnetic phase होची disordered आ ferromagnetic phase होची ordered माने magnetic dipoles मानकर ordering हेतिबो okay आ ई ordering टा at temperature less than Curie temperature रहिबो okay so ये हला तार basic features ferromagnetic substance रो now let us come to the main topic Weiss field theory of ferromagnetism देखो जेते बेले हमें गोटे ferromagnetic specimen नौचु having macroscopic dimension ताले हमें जानिचु it contains a number of small regions जहा को कि हमें domain बोली कहि थाउ which are spontaneously magnetized now within each domain a spontaneous magnetization actually it is due to the alignment of the magnetic moments of adjacent atoms आउ ए समस्ते magnetic moment गोटे particular direction को point करथिबे okay now the interaction which aligns the magnetic moments
is actually quantum mechanical in origin. Okay, এটা এই ইন্টারাকশনটা quantum mechanical interaction and it is due to the exchange properties of electron wave function. Okay, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ୱେସ୍ ଫିଲ୍ଡ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ and it arises when the wave function of two atoms overlap. पुणी आम जाचु इलेक्ट्रॉन्स होची fermions, so they are indistinguishable and they belong to both the atoms. So in such cases the symmetry or antisymmetry of the wave function strongly influence the energy of the system, and it is the exchange symmetry between the spins and the extent of overlap of the wave function which determines the nature and extent of exchange interaction. ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଫିଲ୍ଡ ଯେଉଁ ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଟ୍ରିଟ୍ କରିପାରିବା ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଟୁ ଏନ୍ internal magnetic field, that is BE, which is proportional to the magnetization M within a domain. Thus in this mean field approximation each atom will experience a magnetic field which is proportional to the magnetization. So ଆମେ ୟାକୁ ଲେଖିପାରିବା BE is equal to lambda M. lambda ହେଇଗଲା proportionality constant, ୟାକୁ କୁହାଯାଏ Weiss constant, which is independent of temperature. Now if the external applied field BA যদি হଉଛି তাহলে effective field ହେଇଗଲା B, which is acting on the ion or atom. ତାহଲେ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବା effective field को as equal to BA plus BE. Okay, so applied field which is externally applied ଆଉ internal field এই দুইটার एडिशन करदेले आमे पाइगला effective field. So BA plus lambda M ହେଇଗला. Now as B, BA, BE और M all are vectors, so they act along the same direction, so we can write their magnitude like this: B equal to BA plus BE, which is equal to BA plus lambda M. Now suppose a unit volume of ferromagnetic material which contains n atoms. So एबे मने पका आमे जो paramagnetic case रे गोटे expression पाई थिला about the magnetization in terms of Brillouin function सेटा देखिबो. So सेइथिरु आमे एई expression टा पाई थिला m equal to n gj into j mu b bjx. एठी bjx हेगला Brillouin function, its value is this much. Okay, and for the case of ferromagnetic substances एठी आमे ए जो x रोचे x रो वैल्यू को लिखि परिबा mu j b by kt. Okay, so परीक्षा रे जदि डेरिवेशन करबा पई टाइम अछि ताले याकू डेराइव करबो, नले यू कैन राइट इट्स वैल्यू डायरेक्टली. Okay, so x रो वैल्यू in case of ferromagnetic substance हेगला mu b by kt. So mu b by kt जो आसिला एठी हमें कोन कला यार रिप्लेसमेंट कर देला g j mu b, एटा होची mu j रो वैल्यू. ओके, तापरे हमें b रो वैल्यू को रिप्लेस कर देला एठी ba plus lambda m. Now for spontaneous magnetization when there is no external applied field माने एठी ba हेगला 0, ताले b रो वैल्यू हेगला सिंपली lambda m. ताले x रो वैल्यू हे जिवो एठी ba को 0 पुट कर देला हमें. Okay, now suppose when all the domains are aligned along the magnetic field, then the magnetic moment per unit volume which is known as saturation magnetic moment आमे या को लिखि परिबा ms, s for saturation, यार वैल्यू हेगला ngj into j mu b. Okay, so एबे कोन करिबा कंपेयर करिबा इक्वेशन 2 और 4 को. ओके, सो देखो इक्वेशन 2 और 4 माने 4 हेगला ए इक्वेशन और इक्वेशन 2 दिस वन. ओके, सो ये इक्वेशन 2 और 4 कोन करिबा हमें एबे डिवाइड जदी कर दबा m by ms जदी बाहर करिबा ताले यार वैल्यू सिंपली इक्वल टू द Brillouin function bjx. ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 m रो वैल्यू हमें पाई पारुछु this much. याकू एबे जदी हमें कंपेयर करिबा इक्वेशन 4 सहित ताले m by ms रो वैल्यू हेगला this one. Okay, so the simultaneous solution of equation 5 and 6 can be obtained by plotting the ratio m by ms against
x आउ यार जो प्लॉट आसीबो this is in accordance with equation 7 ऊपर जो हमें पाइला for the value of temperature which is greater than the critical temperature, also equal to critical temperature and also less than critical temperature. Okay, so the plot of this ratio m by ms against x is in accordance with equation 5 for t equal to tc. Okay, so equation 5 रे जोटा हमें पाइला this one ऊपर जो पाउछु हला एई जो केस पाई हमें जो प्लॉट टा पाइबा सेटा केवल एट क्रिटिकल टेम्परेचर हेबो t इक्वल टू tc. ओके, सो यार फिगर को हमें टिके आग देखि नबा this one देखो एठी हमें रेशियो नै येछु m by ms को y एक्सिस रे और x को नै गला x एक्सिस रे. सो एठी हमरो जो प्लॉट देखो 1 2 ଆଉ 3 এই जो तीनटा जाक आमे स्ट्रेट लाइन देखुछु एटा रिप्रेजेंट करूची दिस वन. ओके, आउ जोटा आमे कर्व्ड लाइन देखुछु दिस वन. ओके, एटा हला तमरो जो ब्रिलाइन फंक्शन टा. ओके, सो अकॉर्डिंगली दिस इज द प्लॉट. नाउ एबे तापरे ये कहूची जे the plot of equation 7 gives a straight line with different values of t and that of equation 5 gives a curve. Okay, जोटा हमें देखिला. So एठी हमें याको accordingly किछटा केस हमें देखि परिबा क्रिटिकल टेम्परेचर को नहीं कि फर्स्ट केस हला एट क्रिटिकल टेम्परेचर और क्यूरी पॉइंट माने t इक्वल टू tc. এই टेम्परेचर को आमे फेरोमैग्नेटिक क्यूरी टेम्परेचर मध्य कहि थाउ TC, so that आमे गोटे एठी स्ट्रेट लाइन पाइबा which is given by equation 7. as you can see in this figure एटा हला t equal to tc. एटा आछी ए जो स्ट्रेट लाइन आ गोटे जिंस मार्क करो जो आमे ब्रिलाइन फंक्शन देखुतला इक्वेशन 5. so एटा आछी ए जो कर्व टा. so this straight line is actually tangent at origin to this ब्रिलाइन फंक्शन कर्व. तापरे ए स्ट्रेट लाइन रो जदि हमें स्लोप बाहर करिबा it is given by m by ms which is equal to this much. so at t equal to tc एठी रिप्लेस कर देबा t को tc रे. so हमें ए वैल्यूटा पाइला. तापरे कोन करिबा for low value of x such that if x is very less than 1 ताले ब्रिलाइन फंक्शन रिड्यूस करि जिवो into j plus 1 by 3j into x. ओके, एटा हमें पैरामैग्नेटिक जो केस देखि देला वेस थ्योरी से इथरे बाहर करथिला. ओके, सो टेंजेंट टू द कर्व एट origin will be having a slope given by bjx by x which is equal to j plus 1 by 3j. ओके, अच्छा तापरे एबे ए इक्वेशन 8 भी हमें टेंजेंट देखिला ऊपर जो this one. ओके, आउ इक्वेशन 9 रे भी हमें ए जो टेंजेंट देखिला. ओके, दुईटा जाक टेंजेंट को रिप्रेजेंट करूची. सो हमें एबे याको इक्वेट करि परिबा. सो इक्वेटिंग इक्वेशन 8 and 9 हमें पाई गला this much, so that we can calculate for the value of critical temperature Tc जार वैल्यूटा आसी गला n mu square lambda by 3k. एठी जो mu बा mu j एटा होची total magnetic moment per atom and it is given by mu j equal to gj mu b square root of j into j plus 1. okay, यार भी वैल्यूटा आछी से जो वेस थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म रो. okay, and this shows that Tc is proportional to the Weiss field constant that is lambda. okay, तापरे second case हला below Curie temperature that is at a temperature less than Tc. okay, so below Curie temperature हमें straight line जो पाइला given by equation 7 एटा actually से कर्व को intersect करिबो. okay, which is given by equation 5. so एठी हमें दुईटा पॉइंट पाइबा x equal to 0 and p. as you can see in this figure एटा आछी below temperature Tc. एटा देखो स्ट्रेट लाइन टा कर्व को दुईटा पॉइंट at 0 and at p दुईटा पॉइंट रे इंटरसेक्शन करला x रो वैल्यू. so the intersection at origin x equal to 0 is classically unstable condition. आउ जो intersection at p it correspond to spontaneous magnetization. thus below the critical temperature
spontaneous magnetization results in ferromagnetic materials even in the absence of magnetic field. So ଏବେ ୟାକୁ substitute କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇବା k by n g square j square mu b square by mu b square lambda equal to 1 by tc into j plus 1 by 3j. Okay, so ଏବେ ଆମେ ଏଇ ରେସିଓ जोटा ଆମେ ଦେଖୁଥିଲା m by ms यार वैल्यू आसीଯିବ t by tc into j plus 1 by 3j into x. Okay, so এই जो equation पाइला equation 11 एठी ms will be maximum value of spontaneous magnetization, S for spontaneous, and it gives the dependence of this spontaneous magnetism on temperature. But however a macroscopic sample जदि आमे नेबा गोटे ferromagnetic material रो आउ ताकू रखी देबा at temperature less than critical temperature, that is T less than Tc, ताले it is generally not magnetized. Okay, generally it magnetized ହେବ ନାହିଁ, it only becomes a magnet under the influence of an external magnetic field. Okay, so this behavior is due to the fact that ferromagnetic material is usually subdivided into small regions जोटा कि आमे कही थाउ domain. So each of this domain is spontaneously magnetized even in the absence of external magnetic field. Okay, ये जो magnetic domains गुड़ा रहुछि within the material, they are so arranged as to form closed chains and they cancel the magnetic effect of each other. ତେଣୁକରି total जो magnetism आमे जदि देखिबा it will be zero, hence the whole material will be unmagnetized or neutral. Okay, अच्छा तापरे एबे थर्ड केस को जिबा above Curie temperature माने for temperature T greater than Tc. देखो जेतेबेले टेम्परेचर एई फेरोमैग्नेटिक क्यूरी टेम्परेचर रु बढ़ी जिवो ताले ओ स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन हेबो नाही. ओके, मैग्नेटाइजेशन occurs only when जेतेबेले हमें गोटे बाहरु एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करिबा. ओके, सो जेमति कहली स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन हेबो नाही, एई रीजन को हमें पैरामैग्नेटिक रीजन कहिबा. माने सेई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस टा गोटे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बलिया बिहेव करिवो. और जो मैग्नेटिक डायपोल्स माने रही फेरोमैग्नेटिक केस रे सेमानकर भितरे ऑर्डरली अरेंज्ड हेकी थिले, किंतु पैरामैग्नेटिक जेतेबेले हे गला अबव क्यूरी टेम्परेचर, सो दैट देयर विल बी डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट. ओके, देयरफॉर एज इन केस ऑफ योर पैरामैग्नेटिज्म एठी एबे तमरो जो मैग्नेटाइजेशन रो वैल्यू आसी जिवो दिस मच. ओके, तापरे एबे हमें बी रो वैल्यू पुट कर दबा बी ए प्लस लैम्डा एम, बिकॉज हमको एबे बी ए को इंक्लूड करबा को पड़िबो. तापरे याकू सॉल्व करबा सो दैट शेष रे हमें पाइला इक्वेशन लाइक दिस m into 1 minus tc by t which is equal to c by mu 0 t ba. ये जो c आसुची गोटे एटा कांस्टेंट यार वैल्यू हला दिस मच. ओके, याकू हमें कहबा क्यूरी कांस्टेंट. ओके, सो दैट mu 0 m by ba into t minus tc by t is equal to c by t. पुणी ये जो mu 0 m by ba एटा होची susceptibility chi m, so यार वैल्यू आसिला c by t minus tc. so ये जो हमें फॉर्मूला टा पाइला, दिस इज योर Curie-Weiss law for the case of paramagnetism. Okay, according to this law 1 by chi m is equal to t by c minus tc by c. so आमे याकू फिगर रे ग्राफ प्लॉट करि परिबा 1 by chi m को जदि प्लॉट करूचु टेम्परेचर t सहित ताले गोटे आमे स्ट्रेट लाइन पाइबा. आउ जेतेबेले 1 by chi m टा 0 हे जिवो, देखो एठी जो फिगर रे एटा गोटे आमे स्ट्रेट लाइन पाइला. आउ 1 by chi m नहीं जो आमे y एक्सिस रे टेम्परेचर x एक्सिस रे. सो 1 by chi m 0 जेतेबेले हे गला माने एट क्रिटिकल टेम्परेचर. ओके, आ गोटे जिंस एठी ध्यान दियो, ए जो पॉइंट देखुछ एटा होची फेरोमैग्नेटिक केस पाई क्यूरी पॉइंट, किंतु ए टेम्परेचर टा होची ए पॉइंट टा होची पैरामैग्नेटिक केस पाई. तेणु नियर अबाउट दिस क्यूरी टेम्परेचर एठी टिके स्लाइड डेविएशन देखौची. ओके, स्ट्रेट लाइन टा तमरो पैरामैग्नेटिक हेबा कथा, किंतु डेविएशन ही कि टिके ए जो डॉटेड लाइन देखैला एटा फेरोमैग्नेटिक पाई. ओके, सो ए जिंसटा एठी लिखा हिची देखो, दिस लॉ एग्रीज
quite accurately with the experimental results, but there is slight curvature or deviation near the Curie point Tc. Okay, and this slight curvature leads to distinction between ferromagnetic and paramagnetic Curie points. Okay, जोटा deviation कला सेटा होची ferromagnetic Curie point, जोटा पूरा straight line भलिया रहिला सेटा होची paramagnetic Curie point. Now, in case of iron, nickel, cobalt, their values in Kelvin are given like this. It is Curie temperature, ferromagnetic ପାଇଁ Curie temperature, paramagnetic ପାଇଁ iron, cobalt ଆଉ nickel ର ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି. Okay, so ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ suppose in case of your ferromagnetic, the Curie temperature is slightly lower than your paramagnetic Curie temperature. ତେବେ ये तो है वेस थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, एटा गोटे बही मु देखैली ता सहित आ गोटे बही भी देख ये सेम हिसाब रे ही प्राय लेखा दिखाई. ओके, सो एटा भी तुम चाहिए सेल्फ स्टडी कर जोटा तुमको सहज लगे कि दुई बही मिसेक भी जब तुम तुम हिसाब से नोट कर भी किसी असुविधा नहीं. एठी भी देख से वे रे ही कैलकुलेशन गला किंतु एटा टिके शॉर्टकट अच्छी. ओके, बिकज से जो आम तीन टा टेम्परेचर देखला, प्रथमे देखला बिलो क्यूरी टेम्परेचर, तापरे एट क्यूरी टेम्परेचर, देन योर टेम्परेचर एबव क्यूरी टेम्परेचर. सो एठी देखो ये ग्राफ रो माने एटा जो डिटेलटा से प्रथमे आमे जो पढ़िला सेटा एठी खास किछि एतिके देइनी. ओके, बहुत शॉर्टकट रे देइछि. ओके, सो यू मेक योर नोट एज पर योर comfortability. Okay, so this is all about your Weiss theory of ferromagnetism. Thank you.